Okay. So, hello everyone. Very good morning to one and all present here. Okay. So, welcome back to SISYA Class YouTube channel. And here, so we have come up with one more chapter of revision. Okay, for chapter 7 coordinate geometry. Okay, CBSE board. All right. But this is going to help, okay, all the students of class 10, whether they are in CBSE, whether they are in CBSE, ICSE or state board. All right, all the students, it is going to help all the students. All right, ICSE, fine. Okay, all right. So this is a very small chapter, beta, very small chapter, and definitely you can score, okay, 4 to 5 marks, 4 to 6 marks you can score from this chapter. All right, just 2 or 3 basic formulas are there, and just you need to learn that how to use these formulas, okay, in different cases. Understood? All right. So let me introduce myself. My name is Ajay, and I'm a math master teacher at SISYA Class. Talking about my qualifications, so I have completed my post graduation from IIT Ropar. I'm having more than 4 years of teaching experience. All right. Okay. So let us start. Let us start without wasting any time. Okay. So these are the topics that we are going to cover here. First, we will see, okay, some introduction part. Okay, that what is my coordinate geometry. All right, what are the things are there in this? Okay, then these 3 things we have to discuss. All right, distance formula, how to find out distance formula, how to use this formula. All right, section formula and midpoint formula. All right, so basically the question which is going to be framed in your board exam, that is going to be from these 3 topics only. Okay, distance, section and midpoint. All right, okay, and then we are going to see some example questions, some most important example question and most important PYQ questions. All right, okay, which is going to repeat, okay, which has been repeated, okay, in the last few years. All right, these type of questions has been repeated in the last few years. So we have, okay, we have picked some few of them. All right, so shall we start now? Okay, I think that you're all ready. Yeah, hello beta. Yeah, hello Suchi, how are you? Good. Okay, I hope that you are, okay, you're all preparing for your board exams. All right, and please stay healthy. All right, don't fall sick during your exams. Understood? Okay, fine. So the first thing, beta, what is coordinate geometry? Okay, so coordinate geometry, it is also, sometimes it is also called as Cartesian geometry. All right, and what is meant by Cartesian geometry? Here, beta, we are going to study about geometry using coordinates. All right, we are going to study about geometry using coordinates. Sir, what are coordinates? Coordinates means, beta, whenever we are going to locate any points on the xy plane, okay, so that point, okay, that particular point, it is going to be, okay, represented by some coordinates. All right, okay, so later on we will discuss that what is going to be coordinate. All right, it is made up of 2 things. All right, x coordinate and y coordinate, or abscissa and ordinate. All right, okay, so Cartesian coordinate system, what is this system called here? Okay, so it is going to be a 2-dimensional system. Okay, here we are going to learn about a 2-dimensional system, where if we are going to locate any point now, so that point, it is going to be represented with respect to the 2 perpendicular lines, and these 2 perpendicular lines are nothing but your x-axis and y-axis, and you know that these 2 are always going to be perpendicular with each other. All right, and together they are going to be called as axis, axes. Understood? So there is a difference between axis and axis. All right, there is a difference between these 2 things. All right, when we are going to talk about only one axis, so that time axis. When we are going to talk about, okay, together x and y both, so that time it is going to be called as axis. All right, okay, so the horizontal one, it is going to be called as the x-axis, and the vertical one, it is called y-axis. Understood my point? And whenever we are going to locate any point, so that distance, that point, that coordinate, it is going to be written or represented with respect to the distance from their x-axis and y-axis. All right, sir, I'm not able to understand this theory part. Can you explain with one diagram? Yes. Okay, so suppose we are having your x-axis, beta, this is my, okay, this is my vertical line. Vertical line, it is going to be called as y-axis. All right, and the horizontal line, it is going to be called as the x-axis. Okay, we used to call them as x-axis. All right, so suppose this is my x-axis. All right, and together they both called, beta, together they both called as axis. Okay, axis, axes. All right, acha.
Now this x-axis, okay, now this is my origin, okay, this is my origin, and these two lines, okay, x and y axis, these two are going to be perpendicular with each other, all right. And this origin, okay, on the right hand side of origin beta, on the x-axis, we used to have positive points, okay, we used to have positive points, all right. So suppose this is my 1 2 3 4 5 6, all right, dot 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 dot. In the same way, सर आई एम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किंग, अच्छा ओके फाइन, वेरी गुड भैया, आप कितना साल से पढ़ा रहे हो बेटा? बेटा क्या करोगे जान के, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई कर लो बेटा, ठीक है, कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, ऑलराइट, जितने साल से आप पढ़ रहे हो ना, मैं उतने साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ओके फाइन. नाउ लुक हियर, -1, -2, -3, -4 and -5, all right. And with respect to the origin dear, on the y-axis in the upward direction we used to have positive points, all right. So this is going to be my 1 2 3 4 and so on, all right. And in the downward direction beta, on the downward direction we have negative, all right, -1 -2 -3 -4, all right. Suppose we are having a line, suppose beta we are having a line which is parallel to x-axis, suppose we are having a line which is parallel to dear x-axis, okay. And the distance of this line, suppose the distance is k, suppose the distance of this line parallel to x-axis, it is k, all right. So the equation of this line, it is going to be dear y is equal to k, it is going to be y is equal to k. Suppose the distance is beta 2 units, so that time the equation of this line is going to be y is equal to 2, all right. In the same way, the x-axis, what is the distance of x-axis from y-axis, yes or no, okay. X-axis means here we are having y equal to 0, and that's why we also used to call x-axis as y is equal to 0 line. Understood my point? If someone is asking that what is going to be the equation of line for x-axis, it is going to be y is equal to 0. Got it? So in this two having 2 as a power, so yeah, okay fine. Now look here beta. Suppose if I am having a line which is parallel to y-axis, suppose if I am having a line which is beta parallel to y-axis, and the distance of this line from the y-axis, it is k, or it is something, okay, something p, all right, or let me take as km only, understood, okay. So the equation of this line is going to be beta x is equal to k. The distance of the equation of this line is going to be dear x is equal to k. And suppose if the distance is beta, suppose the distance is 4 units, so that time the equation of this line is going to be x is equal to beta 4. Understood my point? In the same way, if this line it is coincident, okay, it is coinciding with the y-axis, so that time the equation of this line is going to be dear x is equal to 0, and that's why the y-axis it is also going to be called as x is equal to 0 line. I hope this is clear for you, all right. Now dear, suppose if I am having one point, suppose if I am having one point on the xy plane, acha, this whole plane it is going to be called as dear xy plane, this whole plane this is called dear xy plane, or you can say Cartesian plane, or it is also going to be called as dear Cartesian plane, all right, okay. Suppose if I am having one point on my xy plane, okay, so what is going to be the coordinate, how we are going to represent this point? Suppose this point is p, so what is going to be coordinate of this point? Coordinate means beta how much distance, what is the distance of this point from the x-axis and from the y-axis, okay. So what is the distance from the x-axis beta? Distance from the x-axis, it is nothing but dear 4 units, yes or no. Distance from the x-axis, it is nothing but 4 units, and distance from the y-axis, it is nothing but beta 3 units, yes or no. So that's why the coordinate is going to be beta 3, 4, all right. Now whenever we are going to represent any point on my xy plane, so that is going to be represented as dear x, y, where x is called dear your abscissa, and y is called dear your ordinate, all right. Y is called dear your ordinate, all right. I hope this is clear, okay. This is all about the Cartesian plane. Understood beta? Understood. Okay. Now okay, two-dimensional system is beta, two-dimensional system means you are going to have only 2 dimensions, okay, x-axis and y-axis, all right. When you go to your
grade 11 and 12, so that time you are going to learn about three-dimensional coordinate system. So that time you will have one more dimension, that is going to be Z. Understood? So right now you are dealing with only two dimensions, that is x-axis and the y-axis. Understood my point? Okay, you can take example of rectangle. Okay, it is having only length and breadth, that means it is a two-dimensional figure. If you are talking about a cuboid, it is having both length, breadth and height, that's why it is a three-dimensional figure. All right, three-dimensional object. In the same way, okay, in the same way coordinate system also dear. When you are dealing only with two dimensions, so that time it is going to be called as two-dimensional system. All right. When you are dealing with three dimensions, so that time it is going to be called as three-dimensional system. Understood, beta? Fine. All right. Now here, dear, this when okay, now this x and y axis, beta, this x and y axis, it is going to be, okay, it is going to divide your whole xy plane or Cartesian plane in four quadrants. All right. Okay, first quadrant, beta, in the first quadrant, if you are going to take any point in the first quadrant, the coordinate of that point, it is always going to be positive and positive. All right, yes or no? Can you see here? If I am taking any point, okay, in the first quadrant, beta, in the first quadrant, this is my first quadrant, this is my first quadrant, it's my second quadrant, and it's my third quadrant, and it's my fourth quadrant. All right, so whenever you are going to take any point in the first quadrant, the coordinate of that point, it is always going to be positive. Whenever you are going to take any point in the second quadrant, beta, the coordinate of this going to be, beta, minus and plus. The x1 is going to be minus and the y1 it is going to be plus. Okay, beta, the x1 it is going to be minus and the y1 it is going to be plus. Understood my point? Okay, so that's why in the first quadrant both the coordinates are going to be positive. In the second quadrant, the x coordinate is going to be negative and the y coordinate is going to be positive. In the third coordinate, beta, both x and y coordinates are going to be negative, and in the fourth coordinate, beta, can you see here, in the fourth coordinate, if you are going to take any point, so x coordinate is going to be positive and y coordinate is going to be negative. Understood my point? Okay, so in this way, so suppose if any point is given, okay, minus 3, 4, and if they are asking in which quadrant it is lying, beta, so x is minus and y is positive, that means it is going to be lying in the second quadrant. Yes or no? Suppose if I am having any point minus 5, minus 6, so this point it is going to lie in the third quadrant. Yes or no? By looking into the coordinate itself, you can identify that in which quadrant this point is going to lie. Understood? Okay, fine. Now, most important thing, all right, fine, most important thing, that is, beta, distance formula. Okay, distance formula. Suppose if I am having 2 points, AB, all right, and the coordinate of my A point is going to be, suppose it is x1 and y1, and the coordinate of my B point, it is x2 and y2. So if I want to find out the distance between these 2 points, suppose if I want to find out the distance between these 2 points, beta, so it is going to be written as under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. All right, so this we can prove also, but that is going to be take time. All right, and right now we are going to discussing about the, okay, fine, one short video. All right, here just we are going to discuss the important things, so that just in 1 hour or half an hour you can complete this whole chapter and you should be able to get maximum mark. All right, this is what our aim. Understood? So that's why proving things we are not going to do here. Understood my point, beta? All right, so see, if you want to take like this, okay, if you want sorry, if you want to take x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, this will also go. All right, why? Because whenever you are getting any negative number, and if you are going to take the square of that, again it is going to be positive. All right, so whether you are taking x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, it is not going to matter. All right, but remember one thing, if you are taking x2 minus x1, so that time you have to do y2 minus y1. Understood my point? If you are doing x1 minus x2, so that time you have to do y1 minus y2. Understood my point? Don't do that x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Understood my point? So both the things in the same way. All right, in the same way you have to do for the both x and y. All right, okay. Now suppose if I want to find out, suppose if I am having one point, all right, suppose if I am having one point, okay, suppose this point is x, y,
and if I want to find out the distance of this point from the origin, yes or no, from the origin, so that time your distance is going to be beta under root of x square plus y square. Sir, how it is going to be? Why? Because beta, just you need to substitute here. Just you need to substitute here beta. Suppose this is my x1, suppose this is my x1 and y1, and suppose this is my x2 and y2. All right. So x2 minus x1 means beta, this is going to be x minus 0 whole square plus y2 minus y1 beta, that means y minus 0. So that's why you are going to get there x under root of x square plus y square. All right. So directly you can remember that if you want to find out the distance of any point from the origin, अगर origin से अगर आपको distance निकालना है किसी भी point का, तो हमेशा क्या होगा, under root of x coordinate square plus y coordinate square. That's it. Understood my point? I hope that this is clear for everyone. Okay. All right. Now let us have one question. Find the point on y axis which is equidistant from this. We are having 2 points. हमारे पास 2 points है, right? We are having 2 points. Suppose this is my point A, whose coordinate is given as 2, 4, and it's my coordinate. Okay, it's my point B, whose coordinate is 4, 8. All right. Now I need to find a point on the y axis. Suppose मेरे पास एक point है और मैं कह रहा हूं कि ये जो point है ना बेटा, ये जो point है ना, suppose ये मेरा point P है, ठीक है? सपोज ये मेरा पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है. मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट P है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द both points. All right, that means whenever you are going to find out this distance PA and when you are going to find out this distance PB, they should be equal. Yes or no? That means I need to find my coordinates of point P. I need to find out the coordinates of point B such that PA should be equal to PB. Yes or no? यही तो condition है. Understood my point? That PA should be equal to PB. That's it. Okay. Only this is the concept. After this, just you have to use your formula, substitute your value, get your answer. Understood my point? Understood my point? All right. So what is going to be a PA beta? PA means beta PA. All right. Under root of, I will take now x2 minus x1. Okay. Suppose x2 minus x1 means beta. So I am taking this as my point 1. I am taking this as my point 1 and this as my point 2. I am taking this as my point 1 and this as my point 2. All right. So x2 minus x1, it is going to be beta 2 minus x. It is going to be there 2 minus x whole square plus 4 minus y whole square. Yes or no? All right. And what is going to be PB? What is going to be PB? PB means beta 4 minus x whole square plus okay, plus 8 minus y, plus 8 minus y whole square. All right. Now what I will do, I am going to take a square on both hand side. Just do square on both hand side. Square on both hand side. Square on both hand sides. All right. So when you do square on both hand side, your square root will disappear. Okay. Square root will disappear and you are going to get beta 2 minus x whole square plus 4 minus y whole square is equal to 4 minus x whole square plus 8 minus y whole square. All right. Now you can use your identity a minus b whole square. So here you are going to have beta 4 plus x square minus 4x plus 16 plus y square minus 8y. Yes or no? And here you are going to use again your square identity, a minus b identity. All right, a minus b whole square identity. You are going to get beta 16 plus x square minus 8x plus 64 plus y square minus 8y. Yes or no? Now can we cancel out? Yes sir, we can cancel out few things. What are the things we can cancel out? We can cancel out x square, x square. We can cancel out y square, y square. Yes or no? Now anything we are left with, sir? Anything we can left, anything we are having here. All right. Okay. Yeah. Now can we do one more thing? Yes. Fine. So can we now 4 plus 16, it is going to be 20 minus 4x minus 8y. It is going to be 64 plus 16, it is going to be 17, 80, okay, 80 minus 8x minus 8y. Yes or no? Now can we cancel out? Now can we cancel out our beta
8x and 8x minus 8y can we cancel out? Yes, we can cancel out minus 8y and minus 8y, and here we are going to have beta minus 4x and 8x. Okay, so 8x, okay, we can transfer this minus 8x to the other hand side. You will have 8x minus 4. That means you are going to have beta 4x, and here you are going to have beta 80 minus 20. Okay, it is going to be 80 minus 20. That means it is going to be beta 60. Yes or no? 60. Acha. Sir, they have given one thing. Sir, they have given one thing. What they have given? They have given that this point is lying on your y-axis. This point, it is lying on your y-axis. Sir, if your point is lying on your y-axis, so that means definitely the coordinate of x, it is going to be 0. Yes or no? If any point it is lying on y-axis, if any point it is lying on y-axis, then the coordinate of your x-axis beta, it is always going to be 0. Yes or no? It is always going to be 0. Understood my point? So if you are just blindly solving beta, if you are going to just blindly solve here, so don't use, okay, don't use this formula blindly. Understood? Just use some common sense also. Fine. So here, if I am going to substitute all the values, if I am going to substitute x value as 0, so that time we should get y value. Now beta, that's why that time we should get y value. Understood my point? Understood my point? Understood my point? So here we have to beta, here we have to substitute our x coordinate as 0. X coordinate as 0. Understood my point? So here, x coordinate you have to substitute as 0 beta. X coordinate you have to substitute 0. Understood my point? So here you are going to get 2 square plus 4 minus y square. Understood my point? And 4 minus 4 square plus 8 minus y square. Okay, and here you will get your y coordinate. Understood my point? Okay, so don't do this mistake in your exam. All right, so when you will solve this beta, okay, simple, okay, just here, okay, directly here itself you can substitute your x value. Okay, here itself you can substitute your x value as 0, or here itself you can substitute your x value as 0. All right, okay, why? Because when you will solve, okay, like this, okay, if you solve by taking x and y, so that time you are going to get your x coordinate. Understood? But the condition is what? This point is lying on the y axis. Understood my point beta? All right, so that means this x has to be 0. Understood? Okay, so 16 plus y square minus 8y is equal to 16 plus 64 plus y square minus 16y. Yes or no? Yes or no? All right, yeah, fine. 4 16 y square minus 8y 16 64 y square minus 16y. Okay, now we can cancel out something. Y square we can cancel out. 16 plus 4 we can have 20 minus 8y, and here you are going to get beta 80 minus 16y. All right, now 16y we can transfer to the other hand side. You will get 8y is equal to beta 60, and y value is going to be 60 by 8, and that is nothing but beta 15 by 2, right? Okay, 15. Okay, we can cancel out numerator and denominator by 4, and you are going to get 15 by 2. 15 by 2. Okay, all right, all okay. It is not visible, huh? Okay, it is not visible. All right. Okay, fine. All right, it's not visible, huh? Okay, fine. So y value beta, it is going to be, sir, what is the answer? Answer is going to be beta, answer is going to be 15 by 2. All right, answer is going to be dear 15 by 2 beta. So that coordinate, the point which we have assumed, the coordinate of that point is going to be beta 0 comma 15 by 2, you can say, or you can say 7.5 also. All right, you can say 7.5, or you can say 15 by 2. All right beta, fine. So please avoid this thing. Okay, I have, okay, directly I have solved like this. Okay, just to know you, okay, just to, okay, make you understand. All right, that if you are not going to take in this way the statement which they have given, all right, the statement which they have mentioned, if you are not going to consider that, you are going to get some x value also. Understood my point? And that time you are going to get any point. Okay, so you can get any point. Okay, so other than, apart from the x-axis, apart from the point lying on the x-axis, we can get some point on the y-axis also. We can get any point on the xy plane also. Yes or no? Fine, where the distance are going to be equal. Understood? But we have to make sure about this statement, that this point has to lie on the y-axis beta. All right? Okay,
नाउ सेक्शन फॉर्मूला बेटा, सेक्शन फॉर्मूला, when we are going to use section formula beta, when we are going to use section formula, suppose we are having a point A and B, their coordinates are mentioned, okay, and we need to find out the coordinate of C. suppose मुझे C का coordinate find out करना है और ये जो point है ना कैसा होना चाहिए, it should be such that it should be dividing the line AB in the ratio of m:n, okay. इस लाइन को ना बेटा ये जो point है C इसको m:n रेशियो में डिवाइड करना है। अगर m:n रेशियो में डिवाइड करना है तो C जो पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो सपोज आई हैव अज्यूम दैट माय कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y, सो योर x कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी रिटन एज, x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो एक चीज हमेशा ओके, एक चीज ऐसे याद रख लो, ठीक है, कि जब भी मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है ना बेटा, मुझे दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। मुझे क्या करना है, दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो m है ना, m के दूर में कौन सा है, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना तो दैट डेफिनेटली आई हैव टू मल्टीप्लाई विद x कोऑर्डिनेट। बट इस m को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो दूर वाला है उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो दूर में क्या है बेटा, m के पास में x1 है, इसके दूर में क्या है बेटा x2 है, सो दैट्स व्हाई आई विल बी मल्टीप्लाइंग विद x2, ऑलराइट। इन द सेम वे n के पास में क्या है बेटा x2 है, तो n किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 से, ठीक है। n किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, x1 से, ऑलराइट, एंड m प्लस n, ऑलराइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर x कोऑर्डिनेट। इन द सेम वे ओके, हाँ डाउट पूछो क्या डाउट है, ओके। y, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है बेटा, तो y कोऑर्डिनेट मुझे कैसे करना पड़ेगा, अगेन दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो m को किससे मल्टीप्लाई करोगे, दूर वाले y से। दूर वाला y क्या है बेटा, y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, ओके फाइन। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट which is going to divide your given line in the given ratio, all right, and where your given ratio is what beta, m:n, understood, okay। अब इसी को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं मिड पॉइंट फार्मूला में। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बेटा, इसी का जस्ट एक एक्सटेंशन है, ऑल राइट। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा एंड आई एम गोइंग टू गेट माय मिड पॉइंट फार्मूला। सपोज मेरे पास एक लाइन है ए बी, अगेन सेम थिंग, सपोज मेरे पास एक लाइन है, एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स है ए बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2, ऑलराइट। मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है बेटा, सच दैट ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बेटा, दैट मींस इसको 1:1 में इसको डिवाइड करे, यस और नो। यहां पर बेटा आपका n और n क्या है, m और n की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अभी जो मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था ना बेटा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ओके। यहां पर m और n की वैल्यू क्या कर दो बेटा, m और n की वैल्यू जस्ट 1 सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऑलराइट। सो यू आर गोइंग टू गेट बेटा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड इन द सेम वे y की वैल्यू क्या है, हमने क्या निकाला था बेटा सेक्शन फॉर्मूला में, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ऑल राइट। सर अर्ज किया है राजकुमार का इंग्लिश प्रिंस, हेंस देयरफॉर सिंस, ऑल राइट, हेंस देयरफॉर सिंस, ओके फाइन, ऑल राइट, ठीक है। नमस्ते बेटा। रुद्रमणि, सर आई हैव जॉइन्ड द क्लास, ओके थैंक यू, फाइन। नाउ हियर आल्सो बेटा you can substitute your m and n value, okay, you can substitute your m and n value, you are going to get beta y1 plus y2 by 2, all right। so इस फॉर्मूले को बस याद रखना, कभी भी अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है डियर, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल, ओके, वेरी सिंपल, ऑल राइट बेटा। तो अभी तक बस आपको यही 3 फॉर्मूला यूज करना बेटा, टिल नाउ जस्ट यू हैव टू यूज 3 फॉर्मूलेज, ऑल राइट। इस 3 फॉर्मूले को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, फाइन। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे बस डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऑल राइट। सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालना होता है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला में x कोऑर्डिनेट क्या होता है डियर, m इंटू x2, ओके, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, ऑल राइट,
एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है बेटा, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाई m प्लस n। अंडरस्टूड माई पॉइंट, ओके फाइन। एंड आपका थर्ड फॉर्मूला है बेटा मिड पॉइंट, ऑलराइट। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स बाई 2, दैट्स इट, ओके। बेटा हार्डेस्ट वही होता है ना, सबसे डिफिकल्ट वही क्वेश्चन होता है जो आपसे सॉल्व ना हो, दैट्स इट, ओके। अगर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं दैट मींस वो चीज आपके लिए इजी है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए डिफिकल्ट है, वेरी सिंपल, ठीक है। जो बच्चे थोड़े से पुअर होते हैं, ठीक है, जिनका थोड़ा सा सब्जेक्ट वीक होता है, उनको हर एक चीज उनको डिफिकल्ट लगता है। जो तेज होते हैं, थोड़ा सा जो शार्प माइंड होता है, ठीक है, उनके लिए सारा चीज सिंपल लगता है, ठीक है, फाइन। सो कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट लेवल, ऑलराइट, ठीक है, ओके। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट, ओके, वन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्वेश्चन नहीं है, just I have taken an example, but they are the PYQs question which has been repeated many times, all right. They are the PYQ questions, previous year question that has been repeated many times in your exam, all right. Find the coordinates of the point R which divides the line segment joining point. This is in the ratio of 2:4. मेरे पास दो पॉइंट्स है, मेरे पास बेटा दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स का नाम क्या है बेटा, P and Q है। मेरे पास दो पॉइंट्स है, उनका पॉइंट्स का नाम है बेटा P and Q, इनका कोऑर्डिनेट है 2,4 एंड इनका कोऑर्डिनेट है 4,8। मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करना R, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक पॉइंट फाइंड करना है R, जो कि इस लाइन को 2:4 रेशियो में डिवाइड करे। इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करना है बेटा, इस लाइन को 2:4 रेशियो में डिवाइड करना है, 2:4 रेशियो में डिवाइड करना है। और का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x, y, यानी कि मुझे यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, यस और नो, वेरी सिंपल। सो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला ना। यहां पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू 4 है। जस्ट सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज, गेट योर आंसर। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ऑलराइट। सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज, m की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है, 4 है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 6, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी 16/6, 16/6 मींस इट इज गोइंग टू बी 8/3, ओके। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज, गेट योर आंसर, ऑलराइट। So m की वैल्यू 2 into 4, it is going to be 2 into 8, it is going to be 16, and 4 into 4, it is going to be 16, divided by 2 plus 4, it is going to be 6, that means 32/6, 32/6 means beta, it is going to be 16/3, alright. That means the coordinate of point R, it is going to be beta 8/3, comma, it is going to be 8/3, comma 16/3, alright. It is going to be 8/3, comma 16/3, alright. I hope that this is clear for you. Akash Sarma, sir, what you have written? Do you teacher for, sir, which standard do you teach for? Sir, which standard do you teach for? Okay. Hey, beta, don't do spamming, okay? Don't do spamming here, all right? Okay. Don't repeat the same thing, all right, beta? Fine. Look here. If I'm taking your PYQs, then definitely I might be teaching grade 10, right? Yes or no? Fine, all right. Now look here, before asking also you should have some common sense, no? Before asking question also you should have some common sense, right? Okay, that which question you should ask, all right? Okay. Now look here, fine, one more example question. In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining these points? Again, very important question बेटा, this question has been repeated many times. ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट डेटा के साथ, डिफरेंट वैल्यूज के साथ बहुत बार पूछा गया बेटा, ठीक है। दो पॉइंट्स गिवन रहेगा आपके पास, ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन रहेगा, ठीक है, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, ऑलराइट, 3,8 3,-8, ऑलराइट। क्या कह रहा है, एक पॉइंट गिवन है आपके पास एक पॉइंट गिवन है, बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, और जो गिवन लाइन सेगमेंट रहेगा, व्हेन आई विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट वन लाइन सेगमेंट। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा,
कह रहा है कि जो गिवन पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। सपोज मेरा पॉइंट जो है बेटा -4,6 है ना, -4,6, ऑलराइट। मेरा पॉइंट जो है बेटा -4,6 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इस गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मैंने बोला सर सपोज कि इसको m/n रेशियो में डिवाइड करेगा। मैंने बोला कि सर अज्यूम कर लो कि ये इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यस और नो। let the given points divide your let the given point divides the given line in the ratio m/n, in the ratio बेटा m/n, ओके फाइन, ठीक है। यानी कि मुझको यहां पर m और n के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। मुझे m और n के रेशियो में, मुझे m और n के बीच में रिलेशन बताना है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या पता है बेटा, मुझे अपना x कोऑर्डिनेट भी पता है, मुझे y कोऑर्डिनेट पता है, तो कोई सा भी ले लो, चाहे m वाला ले लो चाहे n वाला ले लो। आपको क्या पता है बेटा कि x कोऑर्डिनेट जो होता है ना, जो पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका x कोऑर्डिनेट होता है ना m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यस और नो। substitute your values. What is your x coordinate? Your x coordinate is -4 beta. What is m we need to find out. What is x2? It is going to be beta 3 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। x1 क्या है बेटा -6 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, सो m और n के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, यस सर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या आएगा बेटा, -4 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 3m माइनस 6n, यस और नो। यहां पर क्या आएगा बेटा, -4m प्लस -4n, राइट, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, -4m minus 4n is equal to -3n minus 6n. all right, now can we transfer? Okay, just take your m on one hand side, take your n on the other hand side. all right, so what you will get beta, so you will get, so what I am doing now, I am going to transfer -6n. okay, I am going to transfer this -6n to the other hand side. so इसको other hand side में transfer करोगे क्या आएगा बेटा, 6n minus 4n, 4m को बेटा -4m को मैं दूसरे साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं बेटा, क्या हो जाएगा 3m. okay, so this is 3m, this is 3m, ठीक है, 3m plus 4m. all right, so what you will get beta, you will get 2n is equal to 7m. all right, that means if I want to find out the ratio between m and n, it is going to be dear 2/7, yes or no. The ratio between m and n beta, it is going to be 2:7, yes or no. So this given line, this given point, it is going to divide your given line in the ratio of beta 2:7, yes or no. In this ratio it is going to divide your given line. okay, fine, I hope that हाँ वैसे भी करके कर सकते हो बेटा, ठीक है, k:1 भी करके कर सकते हो, यहां पर आपको k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, k:1 भी मान के कर सकते हो, वहां पर भी आपको k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा, यस। ओके, k:1 भी मान के कर सकते हो बेटा, ठीक है, यस। ऑलराइट, नाउ वन मोर एग्जांपल क्वेश्चन बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन, ओके, कभी कभी पूछा है, ठीक है, दो या तीन बार पूछा है अभी तक, ठीक है, ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है, और जब भी पूछता है बेटा 4 मार्क्स में ही पूछता है, ठीक है। ट्राइसेक्शन, 2 पॉइंट्स गिवन है बेटा आपके पास, क्या है बेटा, 2 पॉइंट्स गिवन है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 2, -2 है, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है डियर, -7,4 है, -7,4 है, ठीक है। अब अगर मैं इस दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, एक लाइन सेगमेंट मिल गया। कह रहा है कि यू नीड टू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच शुड divide this given line segment in 3 equal parts. all right, this is what the meaning of trisection. trisection का मतलब होता है कि गिवन लाइन को या गिवन कोई भी चीज हो, ठीक है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अंडरस्टूड माय पॉइंट। बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है बेटा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सपोज मेरे पास एक पॉइंट P हो गया, मेरे पास पॉइंट Q हो गया, ठीक है, पॉइंट P है, पॉइंट Q है। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट P और पॉइंट Q क्या कह रहा है बेटा, इसको 1:1:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, यस और नो। दैट मींस तीनों पार्ट इक्वल हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, ठीक है, 1:1:1। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, P का मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया बेटा, सपोज इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 और y1।
Q का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया बेटा x2, y2 मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, if I want to find out, let's find coordinate of P. Let's find coordinates of point P. All right. अच्छा, now here बेटा अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है डियर, तो बताना, एक चीज मुझे बताना, ठीक है, यहां पर ध्यान देना कि अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस, ऑलराइट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ऑलराइट। सो अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो एक चीज यहां पर बताऊं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहेगा बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां के यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो रहेगा? इन दोनों के बीच में 1:2 का रेशियो रहेगा, यस और नो, 1:2 का रेशियो रहेगा। दैट मीन्स m की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू 2, ठीक है बेटा। तो x1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या मैं यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटा? फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दूं डायरेक्टली, ठीक है, यस, वेरी गुड, गामा साइन, वेरी गुड, fine. It is going to be 1:2. This point P, it is going to divide your line segment AB in the ratio of 1:2, ठीक है। आई थिंक यहां से आपको x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। सो m into x2 मींस बेटा 1 into -7, that means it is going to be -7 and plus 2 into 2, it is going to be 4, all right, and divided by 3, okay, so it is going to be dear -3, it is going to be -3/3, that means it is going to be -1. When what is going to be your y1 coordinate? Y1 coordinate is going to be dear y, okay, so this, sorry, m into y2, m into y2 means beta 1 into 4, that means 4, and 2 into -2, it is going to be -4, right? कोई गलती कर रहा हूं क्या मैं? 1 into -7, okay, -7, and 2 into 2, 4, okay, fine, and 1 into 4, 4, and 2 into -2, it is going to be -4, right? It is going to be -4 and by 3, so that means it is going to be 0/3, that means this coordinate is going to be 0, all right? तो जो P का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा ना, P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? -1, 0 आएगा, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? -1, 0 आएगा, ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। लेट्स फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। लेट्स फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। Q का फाइंड आउट करते हैं। अगेन वही चीज अब यहां पर देखोगे बेटा, ये जो पॉइंट Q है ना, उस गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बेटा? ये जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? वेर इज योर पॉइंट Q? दिस इज माय पॉइंट Q ना बेटा, यहां पर मेरा पॉइंट Q है, ठीक है। तो इस गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये जो पॉइंट Q है इस गिवन लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगेन यूज योर सेक्शन फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू ऑफ x2 एंड y2, यस और नो। सो x2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x2 की वैल्यू क्या आने वाली है? x2 की वैल्यू आने वाली है ना बेटा, ओके, अगेन सॉल्व। सो यहां पर m की वैल्यू 2 है, ठीक है, दिस इज माय m एंड इट्स माय n, ऑलराइट। सो m into x2, ओके, सो -14, ऑलराइट, it is going to be dear -14, all right, 2 into -7, -14, and 1 into 2, okay, fine, plus 2 divided by 3, it is going to be -12/3, and that is going to be beta -4, all right. And what is going to be your y2 beta? Y2 is going to be 2 into 4 means 8, and 1 into -2 means beta -2 divided by 3, it is going to be 6/3, that means 2, yes or no? So that means आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा Q का, so this is my coordinate of P, this is my P coordinate, and what is my Q coordinate बेटा? My Q coordinate is -4, 2, okay, my Q coordinate is here -4, 2, all right. I hope that this is clear for you, yes or no? Okay, fine, okay, fine, very good, Kama, okay, you are solving along with me, very good, okay, fine. Now let us see some PYQ question, all right बेटा। मैंने बोला ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो चैप्टर है ना बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। खाली 3 फॉर्मूलेज इसमें हैं, डिस्टेंस फार्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सबसे इजी है, मेन जो है आपका डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये दो 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 जो आपका फॉर्मूले हैं इसको आपको फिंगर टिप्स पे रखना है एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, दैट्स इट, ओके, दैट्स इट। सिली मिस्टेक नहीं करना है, फुल मार्क्स आने वाला है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। now let us practice some questions, okay, which have been asked, okay, in the recent years, all right, in the last few years, fine. So a और b का कोऑर्डिनेट गिवन है, ab का डिस्टेंस, ओके, 2ab, ओके, प्लीज 2ab का डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, ab का डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे जल्दीबाजी में ना, ठीक है, ऐसे सब मिस्टेक्स कराते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर दियो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए का पॉइंट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट है बेटा -6,7 एंड बी का कोऑर्डिनेट है बेटा 1,5, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा बेटा, ए बी आपका हो जाएगा ना अंडर रूट ऑफ किसी को भी 0.1 0.2 मान लो, ठीक है। सपोज मैं इसको अपना 0.1 मान रहा हूं, इसको मैं 0.2 मान रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर x2 minus x1, ओके, सो 1 minus -6, ओके, इट इज गोइंग टू बी बेटा 1 minus -6, ठीक है। यहां मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। 1 minus -6 मींस बेटा इट इज गोइंग टू बी 7, ऑलराइट, प्लस y2 minus y1 मींस बेटा 5 minus 7 होल स्क्वायर, ऑलराइट। सो इट इज गोइंग टू बी आई थिंक 7 square plus 4 square, okay, so 7 square plus 2 square, so it is going to be your under root of 49 plus 4, okay, it is going to be 53, all right. So AB is going to be 53, so what is going to be 2AB? 2AB is going to be 2 times of root 53, all right, 2 times of root 53, that means option B is going to be your correct answer. Understood my point? Yes, very good, very good, very good, very good, very good, okay, all right. 2021 assertion time, fine, look here what they are asking. assertion क्या given है बेटा, a distance of the point P from the origin is this, all right। अच्छा पहले देखो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अगर मुझे origin से distance निकालना, अच्छा fine, region they have given the distance of a point P a comma b from the origin, it is given by this, yes, ये तो सही है। origin से अगर मुझे distance निकालना है किसी भी point पर तो क्या करते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ those coordinate square, sum of the coordinates square, yes or no, x square plus y square, that's it. So that means statement R तो करेक्ट है। अब बस मुझे ये निकालना है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ठीक है। सो 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मींस बेटा इट इज 16 प्लस 64, 16 प्लस 64 मींस इट इज 80, रूट 80, करेक्ट। दैट मींस बोथ statements are correct, okay, assertion and region, okay, assertion is also correct and region is also correct and region is the correct explanation for your assertion. That means option A is going to be your correct answer. Okay, fine. I think that you are all getting these questions, right? Okay. Now option A, right? Yes, fine. 2012, okay, this question has been asked beta in 2012. What they have given, coordinates of point P dividing the line segment joining point this and this in the ratio 2:1. पॉइंट P का मुझे कोऑर्डिनेट पूछा है बेटा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछा है। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेरे पॉइंट A है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 1,3 है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट बेटा 4,6 है, ठीक है, ऑलराइट। क्या पूछ रहा है, मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है सच दैट दिस पॉइंट P शुड बी डिवाइडिंग योर गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:1, ठीक है। ए पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, 2:1 रेशियो में, यस और नो, ओके, ठीक है। यूज कर लो, फाइंड आउट कर लो योर एक्स एंड वाई वैल्यू, दिस इज योर m, दिस इज योर m and 1 is your n, yes or no। so what is going to be your x coordinate, your x coordinate is going to be बेटा दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, m को किससे मल्टीप्लाई करना है, दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। दूर वाला क्या है बेटा, इसके पास में 1 है, दूर क्या है, 4 है, ठीक है। तो 2 into 4 8, n के दूर में क्या है बेटा, n के दूर में 1 है, so 1 into 1 1 divided by 2 plus 1, so it is going to be 9/3, that means 3, yes or no, 3। that means x coordinate यहाँ पर खाली B ऑप्शन ही ऐसा जहां पर x coordinate बेटा 3 है, yes or no। that means directly by finding out your first coordinate directly you can mark your option, all right। but if you want to verify, you can verify your y coordinate also, fine। so m into 6, that means 2 into 6 means beta 12 and 1 into 3 means beta 3 by 3, it is going to be beta 15/3, that means it is going to be 5, yes or no, yes or no। that means B option it is going to be your correct option, understood, okay, fine, all right, very good gamma, okay, fine। okay, now
Now let us move to our one more interesting question, very easy question 2020. Okay, 2020. देखो अब इस क्वेश्चन को देखना जरा बेटा, ठीक है। एक पॉइंट है 3,4, ओके, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है बेटा, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, इसको देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं, तुरंत ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के 5 मार के चले जाते हैं, ठीक है। दैट इज रॉन्ग। यस और नो? सी, जस्ट एनालाइज दिस। इफ आई एम हैविंग माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बेटा, एंड सपोज मेरा पॉइंट 1 2 3, ओके, दिस इज माय 1 2 एंड 3, एंड वाई एक्सिस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, मेरा पॉइंट कहां पर बेटा, मेरा पॉइंट 3,4 है, दैट मींस माय पॉइंट इज दिस, माय पॉइंट इज दिस, ऑलराइट। मेरा जो पॉइंट है बेटा वो 3,4 है, राइट, 3,4, ओके। व्हाट दे आर आस्किंग, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है बेटा, एक्स पॉइंट का इस एक्सिस से, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा बेटा, यही तो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से। और ये कितना यूनिट है बेटा, ये आपका कितना है, 4 यूनिट है ना बेटा। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो कितना है, वो 4 यूनिट है बेटा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, बी, बी। ये तो 9th में था, एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली। कभी कभी 9th वाला ही पूछ लेते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन डियर, in this below figure what they are asking you to find out the area of this triangle, the given triangle, okay, fine। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ योर ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर बेस क्या है बेटा, यहां पर बेस आपको देखना पड़ेगा, फिगर में देखकर आपको बेस निकालना पड़ेगा। बेस इसका कितना है बेटा, ठीक है, -1 से लेकर 4 तक, ये नो, कितने यूनिट का डिस्टेंस है बेटा, 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट बेटा 5 यूनिट्स, ऑल राइट। अच्छा, 5 यूनिट, तो हाफ इंटू 5। हाइट कितना है बेटा, इस पॉइंट का हाइट कितना है, इस पॉइंट का हाइट है बेटा 3 यूनिट, यस और नो। इस पॉइंट का हाइट है बेटा 3 यूनिट, यस और नो, 3 यूनिट, ऑल राइट, फाइन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी एरिया, एरिया इज गोइंग टू बी 15/2, राइट। 15/2 मींस इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज 7.5 यूनिट, 7.5 यूनिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन 2021, all right, can you all see this figure, okay, all right। So what they are asking in this question, vertices of a triangle OAB are point O, point A and point B, okay, they have given, right, this is my point O, it's my point O, all right, let me take some dark color, okay, so this is my point O, all right beta, it's my point A and point B. They have given that these 3 are the vertices, okay, and my triangle is what beta, my triangle is OAB, my triangle is OAB, fine। They are saying that AD is your median, AD क्या है बेटा, मीडियन है। अब पहले तो आपको मीडियन का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। मीडियन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्टेक्स एंड डिवाइड्स द अपोजिट साइड। मीडियन हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट होता है बेटा और अपने अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर एडी आपका मीडियन है बेटा, तो दैट मींस बीडी और ओडी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे सो डेफिनेटली पॉइंट डी क्या होगा बेटा, पॉइंट डी क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा। यस और नो, पॉइंट डी क्या होगा बेटा, आपका मिड पॉइंट होने वाला है। किसका मिड पॉइंट होने वाला है, मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। यस और नो, डी क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा ओ बी का। अब ओ बी का पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो। मिड पॉइंट का क्या होगा बेटा, इट इज गोइंग टू बी 0,3। ऑल राइट, यू कैन फाइंड आउट दिस, इट इज गोइंग टू बी बेटा 0,3। ठीक है, पॉइंट ओ जो है ना, अच्छा आपका वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में डेफिनेटली आपका एक्स एक्सिस तो 0 होने वाला है और वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 0 + 6/2। ऑल राइट, यू आर गोइंग टू गेट 3। ओके, सो मिड पॉइंट क्या आने वाला है बेटा, इट इज गोइंग टू बी 0,3 and now they are asking you to find out the distance of AD. Okay, you need to find out distance AD. Okay, so you know your A point, you know your D point, just you need to find out the distance of AD, right? Distance of AD is going to be beta under root of, you know your A coordinate, A का coordinate आपको पता है, D का coordinate आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, फाइंड आउट कर लो आंसर, यस और नो, अंडर रूट ऑफ
x2 minus x1, 4 minus 0, it is going to be beta 4 minus 0 whole square plus 0 minus 3 whole square. Yes or no? It is going to be under root of 16 plus 9. Under root of 16 plus 9 is going to be under root of 25. Under root of 25 is going to be beta 5 units. Yes or no? So your AD length is going to be dear 5 units. All right. It is going to be dear 5 units. Very good. Very good. Okay. All right. Now they have given two coordinates. All right. 2020 question. 2020 question. They have given you two coordinates. दो coordinates given है बेटा. एक coordinate A given है, एक coordinate A given है. ठीक है. They are asking you to find out the distance between these two points. Suppose ये मेरा point P है, suppose ये मेरा point Q है, ठीक है. तो मुझे PQ का distance find out करना है, ठीक है. PQ का distance कैसे find out करते हो बेटा? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Yes or no? ऐसे find out करते हो, ठीक है. अब यहाँ पर आपका x1 y1 क्या होगा बेटा? A वाला point तो आपका x1 होगा, 0 क्या होगा बेटा? आपका y1 होगा. यहाँ पर 0 क्या होगा बेटा? x2 होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? y2 होगा. ठीक है. सब्स्टिट्यूट कर लो, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दो, अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है. सॉल्व करें क्या? सॉल्व करें. ओके. ऑल राइट. गामा शैल वी सॉल्व इट? या फाइन. ओके. ऑलरेडी यू हैव सॉल्व नाउ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. फाइन. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट आवर वैल्यूज बेटा. लेट अस सब्स्टिट्यूट आवर वैल्यूज. ऑल राइट. Find x2 minus x1 means it is going to be dear 0 minus, it is going to be beta 0 minus x1. x1 means dear a cos theta plus b sin theta plus b sin theta whole square. Okay, fine. Plus okay, y2 minus y1. All right, plus y2 minus y1. What is my y2 beta? y2 क्या है? a sin theta है ना. a sin theta minus b cos theta minus b cos theta. Okay, this is cos theta. All right, it's cos theta minus b cos theta and minus y1. y1 means beta minus 0. All right, okay, whole square. All right, now just solve this beta. So here we are going to have what? Okay, so 0 square means 0. Okay, fine. 0 minus something is okay, the same thing we are going to get, and minus square means beta it is going to be positive. All right, ये जो माइनस है ना बेटा, माइनस का स्क्वायर लोगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आपका बचेगा a cos थीटा, आपका बचेगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? आपके पास बचेगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसको आप ओपन कर लो बेटा, इस चीज को आप ओपन कर लो. ठीक है. यहां पर देखते हैं क्या आने वाला है. ठीक है. ऑल राइट. a माइनस बी. ओके, a प्लस बी आइडेंटिटी का यहां पर यूज करो बेटा. a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करो. क्या आने वाला है बेटा? a स्क्वायर. इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा plus b square sin square theta plus b square sin square theta. All right, plus 2ab means 2ab sin theta cos theta, 2ab sin theta cos theta. Got it? All right. यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा? दूसरा वाला क्या आने वाला है बेटा? a square sin square theta plus b square sin cos square theta plus b square cos square theta minus 2ab sin theta cos theta minus 2ab sin theta cos theta minus 2ab sin theta cos theta. Okay, sin theta into cos theta. All right. Okay, fine. ठीक है. इतना समझ में आया बेटा? जस्ट मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है. ठीक है. आफ्टर दिस क्या करोगे बेटा? आफ्टर दिस जस्ट यू हैव टू कैंसिल आउट फ्यू थिंग्स. ऑल राइट. सर क्या कैंसिल होगा? प्लस 2ab sin theta cos theta किससे कैंसिल हो जाएगा? माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा से, माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, बचेगा क्या? बचेगा आपके पास डियर, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा a स्क्वायर, आपके पास बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. अगर मैं यहाँ पर a स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा बेटा? sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. यस और नो? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस
यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है बेटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा डियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ओके, गुड, फाइन। नाउ लेट अस मूव to one more question that has been asked in 2012. Yes or no? Okay, fine. So what is this question asked? Okay, see here, equidistance. Okay, equidistance वाला क्वेश्चन बेटा बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार, ठीक है, मैंने पहले भी बताया ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, गॉट इट, ऑलराइट। व्हाट दे आर आस्किंग, इफ ए पॉइंट दिस ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, देन द वैल्यू ऑफ पी। ओके, फाइन। सी हियर, मेरे पास दो पॉइंट्स है बी सी, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं बी एंड सी, ठीक है, 3, P, कोऑर्डिनेट क्या है बेटा बी का, 3, P है, कोऑर्डिनेट क्या है बेटा सी का, P, 5 है, P, 5 है, ऑल राइट। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं बेटा बी सी को, अब मुझे आई नीड टू फाइंड आउट, ओके, वन पॉइंट हैज बीन गिवन, ओके, वन पॉइंट हैज बीन गिवन, ओके, फाइंड आउट नहीं करना है, एक पॉइंट गिवन है बेटा जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 2, ठीक है। कंडीशन क्या है बेटा, ये जो पॉइंट ए है ना, ए बी से जो डिस्टेंस है आएगा ए बी से, ओके, पॉइंट बी से इसका जो डिस्टेंस है और पॉइंट सी से इसका जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है डियर, सेम है। दिस पॉइंट ए, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, ऑल राइट, ओके, फाइन। सो दैट मीन्स ए बी इट इज इक्वल टू ए सी, राइट। They have given that AB and AC they both are equal, and if AB and AC they both are equal, so अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको P की वैल्यू आ जाएगा। सर एक बार सॉल्व करके दिखा दो, देख लो बेटा, देख लो, सॉल्व करके देख लो, ठीक है, ठीक है। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मेरा A वाला पॉइंट मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, ठीक है, फाइन। मेरा ये पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट 1 है और ए क्या है पॉइंट 2 है, ठीक है, फाइन। सो ए बी मीन्स बेटा x2 minus x1, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गेट बेटा 0 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 2 minus p प्लस 2 minus p होल स्क्वायर, गॉट इट। AC, what is going to be AC dear, AC, okay। So again 0 minus p होल स्क्वायर, 0 minus p होल स्क्वायर, 0 minus p होल स्क्वायर प्लस 2 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 5 होल स्क्वायर, ऑल राइट, ओके। सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा बेटा, आई एम गोइंग टू गेट 3 स्क्वायर मींस आई एम गोइंग टू गेट 9 प्लस 2 minus p होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 5, 2 minus 5 means dear it is going to be -3, and -3 whole square means beta -3, this is going to be whole square, okay, -3 whole square means it is going to be 9, yes or no। Now just take square on both hand side, squaring on both hand side, squaring on both hand side, squaring on both hand side, comma we get, okay, what we are going to get beta, we are going to get 9 plus 2 minus p whole square is equal to p square plus 9, all right। Now this 9 and 9 they will get cancelled, right, yes, okay, they will get cancelled, all right। Now can we open this bracket, 4 plus p square minus 4p is equal to beta p square, all right, and still p square and p square they will get cancelled, and what we are going to get, we are going to get 4p is equal to 4, and from here we are going to get value of p is going to be 1, okay, value of p it is going to be 1, all right, value of p it is going to be 1, okay, gamma, value of p it is going to be 1 beta, okay, not 9, value of p it is going to be 1, all right, not 9, fine, please, okay, get your mistake, all right beta, please verify, okay, fine. Now okay, now let us move to the next question, all right beta, let us move to the next question. This question has been asked in 2015 question, all right. They are saying, okay, they have given you 3 points, all right, they have given you beta 3 points, all right, point A 4,7, point B P, 3, point C 7, 3, all right. They are saying that these are the vertices of a right angled triangle
राइट एंगल एट बी, ओके दैट मीन्स मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहां पर है बेटा, पॉइंट बी पर है, ठीक है। ए मेरा राइट एंगल है यहां पर, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बेटा, p,3, बी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बेटा, p,3। मैंने इसको मान लिया पॉइंट ए, मैंने इसको मान लिया पॉइंट सी, ठीक है। मैंने इसको मान लिया पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है बेटा 7,3, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4,7, ठीक है, यस और नो। अब मुझे यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज ऑफ पी फाइंड आउट करना है बेटा, वैल्यूज ऑफ पी, ओके, नो इश्यूज गामा, ऑलराइट फाइन, ओके। नाउ we need to find out the values of p. how to find out the values of p? सर इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, राइट एंगल देखते ही कुछ मन में आता है क्या, राइट एंगल देखते ही कुछ मन में आता है, यस सर, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, यस और नो, बाय पाइथागोरस थ्योरम always when we see right angle we always get, okay, हमें क्या याद आता है, पाइथागोरस थ्योरम का याद आता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ऑलराइट। अच्छा, what is Pythagoras theorem beta? Pythagoras theorem says that whenever you add the two sides, whenever you square and add the two sides of a right angle triangle, it is always going to be equal to the hypotenuse square or the longest side square, all right. So here I know that this is my hypotenuse, okay, this is my hypotenuse, that means AC square, it is going to be equal to beta AB square plus BC square, yes or no? बस इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। सर बहुत लंबा जाएगा, यस, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन भी तो बेटा 4 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, ओके। व्हाट इज गोइंग टू बी AC, ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी AC, फाइन। सो AC इज गोइंग टू बी बेटा अंडर रूट ऑफ ऑल राइट। सो AC स्क्वायर क्या आएगा बेटा, AC स्क्वायर क्या आने वाला है, सो सपोज दिस इज माई पॉइंट 1, सपोज दिस इज माई पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ओके, सपोज इसको पॉइंट 1 मान लेते हैं, इसको पॉइंट 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 क्या आने वाला है बेटा, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर आने वाला है, प्लस 7 माइनस 3, ओके। अच्छा, दिस इज माइनस 7 ना, ओके, 4,7, a की वैल्यू क्या है बेटा 4,7 है, ओके, ओनली 7 ना, p,3 एंड 7,3, ओके फाइन, ऑल राइट, ओके, माइनस नहीं की बार, ठीक है। सो 4 माइनस 7 it is going to be, and we are going to get 7 minus 3, okay, 7 minus 3, all right, whole square, fine। AB का वैल्यू क्या आने वाला है बेटा, AB क्या आने वाला है बेटा, अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैंने 1 and 2 माना है ना, ठीक है, इसको भी 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है, फाइन। सो 2 minus 1, that means it is going to be 4 minus p whole square, 4 minus p whole square plus 7 minus 3 whole square plus 7 minus 3 whole square, ठीक है, all right, this is 3, okay, this is 3 plus under root of again इसको 1, okay, अब इसमें से, ठीक है, इसको 2 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, ठीक है, इसको 2 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, ठीक है, फाइन। अभी इसको 2 मानते हैं और इसको 1 मानते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो ना, मैंने बोला ना, either you can write x1 minus x2 or x2 minus x1, all right, but for both x and y coordinates you have to do in the same manner, all right, in the same manner you have to do, all right बेटा। so यहाँ पर कर लो बेटा 7 minus p कर लो, यहाँ पर 7 minus p whole square कर दो plus 3 minus 3, it is going to be 0, all right, okay, I hope that this is clear for you all, okay, all right। now अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 4 minus 7 मींस -3 स्क्वायर मींस बेटा 9, ऑल राइट, ओके, एंड 7 minus 3 मींस बेटा अगेन इट इज गोइंग टू बी 4 and 4 स्क्वायर, ओके, 4 स्क्वायर मींस बेटा इट इज गोइंग टू बी 16 प्लस 7 minus 3 4 स्क्वायर 16, ऑल राइट, ओके, एंड हियर वी आर गोइंग टू हैव बेटा, हियर वी आर हैविंग 4 minus p whole square plus 7 minus 3 means बेटा 4 square means बेटा 16, all right, and here we are going to have, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 0 हो गया ना, यहाँ पर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा 7 minus p, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है आपके पास 16 plus 9 इट इज 25 का रूट क्या आता है बेटा 5 आता है, ठीक है, 5 is equal to this
5 is equal to this. Shall we transfer this whole thing to the other hand side? Shall we transfer this whole thing to the other hand side बेटा? इस पूरे चीज को ना मैं दूसरे हैंड साइड में इक्वल टू के दूसरे हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं. क्या आएगा मेरे पास आएगा ना 5 माइनस, ठीक है, मैं डायरेक्टली ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं. ठीक है, ये आ जाएगा -7 प्लस p आ जाएगा. ठीक है, फाइन. 5 माइनस in bracket you are having 7 minus p. Okay, so that minus sign will get multiplied with both the quantities, that is 7 and minus p. All right, so that's why 7 will become -7 and minus p will become plus p. All right, and here we are having beta under root of 4 minus p whole square, 4 minus p whole square plus 16. All right, okay. अभी मैं क्या करूंगा बेटा, स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, ऑन बोथ हैंड साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड. ओके, टेक स्क्वायर्स ऑन बोथ हैंड साइड, व्हाट यू विल गेट. ओके, सो यहां पर इसको सॉल्व करोगे ना, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा बेटा p-2. ठीक है, यहां पर आपके पास आएगा बेटा p-2. गॉट इट. 5 minus 7 that is going to be -2. All right, now just take square on both hand side, take square on both hand side. You are going to get beta p-2 whole square means you are going to get p square plus 4 minus 2p is equal to, here you are going to have beta 4 minus p whole square. 4 minus p whole square means beta 16 plus p square minus 8p, right, and plus 16. Got it. ए आने वाला है. ठीक है, यहां पर मैंने बेटा 2 स्टेप मैंने स्किप कर दिया. ठीक है, हियर आई हैव स्किप 2 स्टेप्स. ऑल राइट, सो p-2 का पहले स्क्वायर करोगे तो p-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से सेकंड हैंड साइड में दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपके पास बचेगा 4 minus p होल स्क्वायर प्लस 16. एंड आफ्टर दिस जस्ट यू हैव टू ओपन योर ब्रैकेट्स. ऑल राइट, a माइनस b का आइडेंटिटी का यहां पे यूज करोगे तो आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2p. 4 minus p होल स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन करोगे, यू आर गोइंग टू गेट 16 प्लस p स्क्वायर माइनस 8p एंड 16 विल बी एज इट इज. ऑल राइट, ओके. नाउ कैन वी सॉल्व दिस बेटा? p square and p square they will get cancelled. Okay sir, it will get cancelled. minus 8p shall be transferred to the other hand side. minus 8p shall be transferred to the other hand side. So you will get 8p minus 2p. That means you are going to get beta 6p. All right beta. And यहाँ पर क्या है? 16 and 16, 32. 32 minus 4. Okay, it is going to be I think 28, right? कुछ हुआ है क्या? कुछ गलती हुआ है क्या बेटा? Yeah, so here 6p and 16 and 16, 32 minus 2. Okay, 32 minus 4. Okay, it is going to be 28. All right, so p value it is going to be 28 by 6. I hope. Okay, 28 by 6 means it is going to be beta 14 by 3. All right, so it is going to be 14 by 3. Fine. ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेना कोई अगर मिस्टेक होगा. ठीक है, ओके, जस्ट लुक इनटू इट. ऑल राइट, आई एम नॉट हैविंग स्पेस. ठीक है, स्पेस नहीं है. ठीक है, मे बी. ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक होता है तो जस्ट लुक इनटू इट. ऑल राइट, बट द मेन थिंग इज व्हाट यू हैव टू यूज दिस थ्योरम. ऑल राइट, मेन थिंग क्या है बेटा? आपको इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और यूज करके बेटा आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यूज को और अपने आप को इसको सॉल्व कर लेना है. ठीक है, यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स. अंडरस्टूड? ऑल राइट, ओके. Now let us move to the 2020 question. Okay, let us move to the 2020 question. What they are saying, the बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत बच्चों के इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया था. ठीक है, बहुत बच्चों ने. ऑल राइट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट a, b. ऑल राइट, मेरे पास एक पॉइंट है a, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? -8, 0. ठीक है, एक पॉइंट है मेरे पास b, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा 8, 0. ऑल राइट, कैन यू फील इट that this point, it is nothing but this line, the line joining point A and B, it is going to be your x-axis. Sir, why it is going to be your x-axis? Why? Because your y coordinate is 0 here beta. Can you see here? y coordinate दोनों में क्या है बेटा? 0 है. ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट जो है कहां पर लाई कर रहा है? आपके x-axis पर लाई कर रहा है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेरे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है. ठीक है, अगर मैं इसका, मेरे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है जो कि इस लाइन से पास हो रहा है. ठीक है, मेरे पास सपोज मेरे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं. ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, एक किसी पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का नाम है 0, k. ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगा बेटा? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डेफिनेटली बेटा, इट इज गोइंग टू डिवाइड
योर गिवन लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, यस और नो। और यानी कि ए वाला जो पार्ट होगा बेटा, ये जो पॉइंट पी है क्या आने वाला है, पॉइंट पी आपका 0,0 आने वाला है। सर क्यों आने वाला है, क्यों, पॉइंट पी आपका मिड पॉइंट होने वाला है ए और बी का, राइट, यस और नो। Point P, it is going to be the midpoint of A and B, and the midpoint of A and B it is going to be here 0,0, that is origin, all right, point P। but मेरा line तो ये है, yes or no, but my line is this ना बेटा, this green line, yes or no, and point P, okay, it is passing through this point P, passes through a point P, that means this point P it can be this, yes or no। ये जो point P है ना, ये जरूरी थोड़ी है कि यहीं पर लाई करेगा, इट इज नॉट सेइंग ना, इट ऐसा तो यहां पर नहीं गिवन है ना बेटा कि जो पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पी कहां है, इट इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, दैट मींस ये पॉइंट पी यहां पर हो सकता है, पॉइंट पी यहां पर हो सकता है, यस और नो। इट कैन बी एनीवेयर ना बेटा, ये यहां पर हो सकता है, दिस कैन बी योर पॉइंट पी, 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 यस और नो। बट इन ऑल द सिचुएशंस डियर, what is going to be your point P? Your point P is going to be 0, k, yes or no। जहां पर k क्या कुछ भी वैल्यू हो सकता है, yes or no। Always the x coordinate it is going to be 0, but it can have any value of y, yes or no। It can have any real number, any real value of y, understood my point। That means the k, point k, the value of k, it can be any real number beta। Are you getting my point? I hope, right, yes or no, that you might be getting this point, okay dear beta, all right everyone, okay fine। now let us move to one more question that has been asked in 2016, all right। क्या गिवन है बेटा, क्या गिवन है, इसमें गिवन है एक पॉइंट पी है, अगेन सी हियर, अगेन इक्विडिस्टेंस क्वेश्चन, ओके, अगेन इक्विडिस्टेंट क्वेश्चन, ऑलराइट। तो अभी तक मैं 3 इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, ओके। सो देयर इज वन पॉइंट पी, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, ऑलराइट। मेरे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है, मेरे पास बेटा 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, ओके। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ए प्लस बी, पॉइंट बी का ओके, पॉइंट ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, ऑलराइट, दिस इज माई कोऑर्डिनेट ऑफ माई पॉइंट ए। What is going to be coordinate of my point B beta? It is going to be a minus b, comma a plus b. All right, okay, ठीक है। मेरे पास कोई point P है, ठीक है। I am having one point P, okay. I am having one point P whose coordinates is beta x, comma y. All right. What they are saying? They are saying that this point P it is equidistant from point A and B. All right. If this point P it is equidistant from point A and B, so that time you have to prove that bx is going to be equal to ay। bx किसके इक्वल है बेटा, ay के इक्वल है, ठीक है। तो इसको आपको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे, सेम थिंग, दिस पॉइंट a it is equidistant from this point p, it is equidistant from point a and b, right, it is equidistant from point a and b, all right beta। that means the pa, distance of pa, it is equal to the distance of pb, yes or no। so that means they have given that pa is equal to beta pb, got it। if pa is equal to pb, just substitute your distance formula, yes or no, substitute, okay, just use your distance formula beta, use your distance formula। so how you are going to use your distance formula, suppose this is my point 1, suppose this is my point 2, suppose this is my point 1 and 1, all right, fine। अच्छा, x2 minus x1, so x minus a plus b whole square plus y2 minus y1, that means y minus b minus a, y minus b minus a, okay। don't do mistake here in plus and minus, okay। अगर plus और minus में mistake हुआ बेटा तो prove नहीं होगा, ठीक है, then you won't be able to prove this, okay, all right। now next, okay, again x2 minus x1, y2 minus y1 whole square, all right। so here I am going to have beta x minus a minus b, right, x minus a minus b whole square plus y minus a plus b whole square, all right, ठीक है, चले, ठीक है। now just, okay, if you know how to solve equations, it is going to be very easy for you, all right। and please don't do silly mistakes here, okay,
please don't do silly mistakes here beta. Fine. Why? Because most of the student, okay, you all know, okay, most of the students, they know that how to solve this, okay, but they won't be able to prove this, okay. Why? Because some silly mistake. Got it? Okay. So here, let us, what should I do? I'm just taking squaring on both hand side, okay. Just I'm doing squaring on both hand side, okay. Squaring on both hand side, okay. Fine. What I will get? I'm going to get beta this now. I'm going to get x minus a plus b whole square plus y minus b minus a whole square, right? Okay, is equal to, here I am having x minus a minus b whole square plus y minus a plus b whole square. All right beta, all right dear, fine. ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. let us solve this, okay, fine. So here होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक से मैंने लिख दिया है, ठीक है. दिस इज होल स्क्वायर, ऑल राइट, या दिस इज होल स्क्वायर बेटा, फाइन. सो कैन वी सॉल्व दिस बेटा, फाइन. ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, कैन वी यूज आवर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है. इसको आप एज ए वन क्वांटिटी, ओके, अज्यूम a माइनस बी एज वन क्वांटिटी, ओके. हियर you assume this b minus a as one quantity, a minus b as one quantity, and a plus b beta as one quantity. All right. So x minus something whole square, x minus something whole square means beta x square plus that square minus 2ab, okay, 2 into x into a plus b. Yes or no? Fine. Plus y minus something whole square, y minus something whole square means beta it is going to be y square plus b minus a whole square, okay, fine, minus 2y into b minus a, yes or no, is equal to, got it? Okay, अच्छा. Now next, यहाँ पर x minus something whole square, so it is going to be beta x square plus a minus b whole square minus 2x into a minus b, all right, and plus y minus something whole square means beta it is going to be y square plus it is going to be y square plus a plus b whole square minus 2y a plus b minus 2y a plus b, ठीक है, ठीक है. अब बस इसको आप सॉल्व करो, देख लो कहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, ओके. Okay, all right. Please, now we are going to identify that what are the things we can cancel out here. Okay, what are the things we can cancel out here, beta? x square बेटा में cancel कर दिया, y square बेटा y square में cancel कर दिया, ठीक है. कुछ और भी है, a plus b whole square बेटा and a plus b whole square मैंने cancel कर दिया. और कुछ है क्या बेटा? b minus a cancel होगा क्या? b minus a and here we are having a minus b, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर बेटा b minus a whole square, ठीक है. If I am going to take minus common, okay, if I am going to take minus common, all right, what I am going to get? I am going to get a minus b, I am going to get beta a minus b whole square, ठीक है. ऐसा नो, मैं b minus a में क्या करूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है. b minus a में मैं क्या करूँ बेटा, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा, a minus b हो जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स, और अगर इसका स्क्वायर करोगे बेटा ना, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज बोथ, यस और नो. b minus a whole square, it can be written as a minus b whole square also, and that's why b minus a whole square I am going to cancel with a minus b whole square. I hope that you are all getting this, okay. That's why I have cancelled these things, okay. Now just manage, okay. Now just, okay, fine, just collect your things, all right. So now here I am having minus 2x a plus b, and here I am having minus 2x a minus b, all right, okay, fine. So what I am doing now, I am just transferring this to the other hand side, okay. I am just transferring this to the other hand side. I am taking 2x common, okay. जब मैं 2x को कॉमन लूंगा बेटा, तो क्या आ जाएगा ना, मेरे पास आएगा बेटा a minus b, ठीक है. मेरे पास आएगा a minus b और यहाँ पर है minus a plus b, ठीक है बेटा, ठीक है डियर. I hope, okay, fine. Just I am skipping, okay. Here I have skipped one step, all right बेटा, fine. I have transferred this one, to the other hand side, तो क्या हो जाएगा, plus 2x हो जाएगा ना, plus 2x into a minus b. वहां से
मैं 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बेटा क्या है, माइनस में है ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको दूसरे साइड भेजाऊं, ठीक है, ये जो -2y वाला है ना बेटा, ये वाला सेक्शन, इसको मैं दूसरे साइड भेजाऊं, ठीक है, आई एम ट्रांसफरिंग इट टू द अदर हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, ओके फाइन, सो इट विल बिकम 2 + 2y, ओके, एंड नाउ हियर आई एम टेकिंग बेटा 2y कॉमन, ओके। अब 2y अगर कॉमन ले लोगे बेटा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा b - a, ओके, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर -2ya + b है, यहाँ पर क्या है बेटा, -2ya + b है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2y I have taken common, you will get बेटा a + b, you will get बेटा a + b, ऑल राइट, ठीक है। अब चलो कुछ कैंसिल करते हैं बेटा, कुछ कैंसिल करते हैं फटाफट, ठीक है सर, 2 और 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है बेटा, 2 और 2 को कैंसिल कर दूं, और क्या करूंगा बेटा, सर इस ब्रैकेट को ओपन कर लो ना, ब्रैकेट को ओपन कर लोगे तो अपने आप सारा आंसर मिल जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लो, क्या आएगा बेटा, a - b, यहां पर क्या आएगा, -a - b, ठीक है, ठीक है, यहां पर लास्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा बेटा, y इंटू b - a ना, b - a, ठीक है, ओके, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, -a - b, ठीक है, कुछ और कैंसिल होगा क्या, कुछ और भी कैंसिल होगा क्या बेटा, सर +a और -a कैंसिल हो गया, सर -b एंड +b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास बेटा, मेरे पास क्या बचा है, ठीक है, देखते हैं क्या बचा है बेटा, तो मेरे पास बचा है -b एंड -b, इट इज गोइंग टू बी -2b, सो मेरे पास बचा है बेटा -2bx, राइट, और यहां पर क्या बचा है बेटा, -a दैट मीन्स -2a -2ay, yes or no, so can be cancelled -2 and -2, so what I am left with, I am left with beta bx is equal to ay, I am left with beta bx is equal to ay, and hence proved, okay, and hence proved, all right, okay fine, so this is how you have to solve this question, got it, okay, so it's a lengthy question and you have to be careful about your sign and calculation, got it beta, got it, all right, okay fine. So one more question asked in 2010, this question has been asked in beta 2010, all right, just give me one moment, all right, ठीक है, ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ओके, मेरे पास 2 पॉइंट्स है, ठीक है, आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स A and B, ओके, आई एम हैविंग बेटा 2 पॉइंट्स A and B, ठीक है, ओके, points coordinates are beta 2, 1 and this point coordinate is your 5, 8, 5, -8, all right, okay fine, now okay fine, now what they are saying, point P, what they are saying beta, that this point P, what they are saying, that this point P what they are saying, that this point P, it is dividing this line segment in what ratio, in 1:3 ratio, right, AP is to AP by AB is equal to 1/3, that means it is nothing but AP is to AB na, AP is to AB is equal to 1:3, yes or no, what is AB, what is AP, that means this is my point P, AP, I think, okay, there is some mistake, okay, this is AP is to PB, right, this point is AP is to PB, yeah, this point is beta AP is to PB, okay, this is not AB, this is a misprint here, this should be beta AB, okay, this should be PB, okay fine, this point is beta P, okay fine, AP is to PB, okay, there is a misprint here, all right, they are saying that this is in the ratio of 1:3, all right, that means if there is one point P, okay, and its coordinate they have given, a point P coordinate they have given, no, point P coordinate they have not given, all right, they are just saying that this point P, it is dividing your line segment AB in the ratio what beta 1:3, they are dividing it in the ratio of 1:3, got it, acha, after this they are saying that this point P, it is lying on this line, this, they are saying that if this point na, it is lying on this line, there is one line, there is one line, okay, एक लाइन है, ठीक है, यहां से P से पास करते हुआ ना बेटा एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है ना उसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है 2x - y + k = 0,
then you have to find out the value of k, okay, then you have to find out the value of k, okay. पहले हम करते हैं, पहले हम p का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पहले हम अपने p पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। सब p पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहां पर वी आर गोइंग टू यूज आवर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मुझे p का कोऑर्डिनेट निकालना है इफ वी नो द रेशियो इन विच दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग योर गिवन लाइन ए बी, यस और नो, ओके फाइन। सो यहां पर 1 क्या है बेटा आपका m है, 3 क्या है डियर n है, ठीक है। सो आपका x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, x कोऑर्डिनेट इट इज गोइंग टू बी, आई होप दैट all right, okay fine, let me like this, all right, so that you can see the whole board. So x coordinate क्या आएगा बेटा, x coordinate क्या आने वाला है, see here, m into x2, suppose this is my point 1 and b is my point 2, okay fine. So m into x2 बेटा, m into x2 means m into x2। अच्छा यहां पर x2 क्या होगा, यहां पर तो दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमने तो ऐसा देखा है ना कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द पॉइंट विच इज एट द फॉर डिस्टेंस, राइट, जो पॉइंट हमारे जो दूरी वाली डिस्टेंस पे है उससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो m को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, m को हमेशा दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो m के नजदीक में 2 है तो उसके दूर में क्या है बेटा 5 है, सो 5 इंटू एम, ओके 5 इंटू एम प्लस 3 इंटू 2 6, 3 into 2, okay, 3 into 2 and 5 into m is beta, m is 1, okay, here your m is 1, all right, divided by 3 plus 1 4, okay, that means it is going to be 6 plus 5 11, this is going to be 11 by 4, all right, okay fine. What is going to be coordinate, what is going to be the coordinate of point y का coordinate क्या होगा बेटा, again m into y2, 1 into minus 8, that means minus, okay, 1 into minus 8, okay, let me write like this, okay, 1 into minus 8, 1 into minus 8, okay, 1 into minus 8, all right, plus 3 into 1, all right, divided by 1 plus 3, okay, so it is going to be there minus 8 plus 3, it is going to be minus 5, right, it is going to be minus 5 by 4, all right, that means मेरा x और y का जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा ये क्या है, this is going to be 11 by 4 comma minus 5 by 4, yes or no. Now once I know this coordinate beta, I know that this point P, it is lying on my given line, yes or no, this point it is lying on my given line, and that's why if any point it is lying on your given line, then definitely it is going to satisfy your given line, it is going to be definitely satisfy your given line beta, and that's why we are going to satisfy, we are going to substitute the coordinate, okay, substitute our coordinate, okay, coordinate of point P in the given equation of line, that is 2x minus y plus k is equal to 0, yes or no. So 2 into x coordinate is what beta, 11 by 4, and y coordinate is what beta, minus 5 by 4, plus k is equal to 0, all right. So now when you substitute this, okay, now when we solve this, we are going to get beta 22 by 4 plus 5 by 4 is equal to minus k. So from here k value is going to be beta, it is going to be I think minus time 27 by 4, all right. So this is what going to be the value of k, all right. So this question has been asked in 2010, all right, but right now they are not, okay, right now they are not asking this type of question. Why? Because, okay, most of the things, okay, some parts it has been reduced, right, okay, from your portion, okay. So in 2010 and 15 they used to ask this type of question, all right. Why? But right now they will not going to add this equation of line, all right, equation of line they are not going to add. Why? Because it has been removed from your CBSE, from the CBSE board, all right. But this type of question it can be asked in ICSE, okay, all right. Why? Because in ICSE you are having your linear, you are having your line of equation of line chapter, as well as you are having your section formula, all right. So you can expect in ICSE board, you can expect those who are having equation of line in their syllabus, they can expect these type of questions, sure, okay, fine. And whenever they are going to ask this type of question, surely they are going to ask in maximum mark beta, okay, in maximum mark, all right. Now one last question again, 2013
this type of question, it is not going to be asked in CBSE, all right? It is not going to be asked in CBSE, okay? It is not going to be asked in CBSE. Why? Because this portion has been removed. These things has been, okay? These topics has been removed from your syllabus, all right? But still, it can be asked in ICSE, all right? Okay, fine. Acha. How to find out the area of your triangle? We need to find out the area of your triangle, and 3 coordinates are given, okay? Coordinate A, coordinate B, and coordinate of C, all right? Three points are there, okay? 3 points are there, A, B, and C, okay? Point A, point B, and point C, all right? So they are going to make one triangle. If 3 points are there and they are not collinear, if 3 points are given and they are not collinear, that means 3 non-collinear points. Always they are going to form one triangle. And if they are going to form triangle, definitely it is going to have some area. And they have given this area is what, beta? 6 square unit, okay? 6 square unit, all right? Area of this triangle is 6 square unit, and we need to find out, okay? We need to prove this, okay? We need to prove here, okay? X plus y is equal to 15, all right? So here, whenever 3 coordinates are given, and you are asked to find out the area. So area, it is always going to be given by area is equal to half into x1, x2, x3, all right? Okay, plus x1 into y2 minus y3, y2 minus y3, plus y3 minus y1, plus y1 minus y2. That's it, okay? Substitute your values and prove this, all right? Just substitute your values, all right, and you will be able to prove this, okay? So suppose this is my x1, okay? Suppose this is my x1, okay? X coordinate is what, beta? X1, okay? Suppose this is my point 1, suppose this is my point 2, suppose this is my point 3, all right? So here, half into beta, x1 is going to be x, y2 minus y3, okay? So y2 means beta, y2 means 2, and y3 means 1, okay? So 2 minus 1, okay? 2 minus 1, all right? Plus, what is x2, beta? x2 is nothing but 1. x2 is nothing but 1. y3 minus y1 means, dear, y3 means beta 1, and y1 means beta y. So 1 minus y, all right? Plus, x3 means, dear, 2 into y1 minus y2. y1 means beta, y1 means beta y, minus y2 means beta 2, all right? y2 means beta 2. Got it? Fine. So just multiply this 2 into 6, it is going to be beta 12 is equal to, so x, 2 minus 1 means 1, and 1 into x means beta x, plus 1 minus y, and 2y minus 4, all right? So can we solve this? Yes, we can solve this. 12 is equal to x, minus y plus 2y means beta, it is going to be y, and 1 minus 4 means beta minus 3, and minus 3 when you will transfer to the other hand side, you are going to have, dear, x plus y is equal to 15, yes or no, okay? Hence proved, all right? Hence proved, all right, beta, fine. So these are the questions, most important questions that we have discussed, all right? Okay, fine. So here we have completed this whole chapter, that is coordinate geometry, okay, with all the topics, okay? Here we have covered all the topics that is there in your CBSE, all right? And we have also discussed, okay, most important question and example question. Say, see, if you are not, okay, till now, agar aapko confidence nahi hai, till now if you are not having confidence, all right, in your math, fine. So please try to go through our videos. It is going to help you a lot, all right? So in 1 hour or in 2 hours, approximately 2 hours, we are here covering each chapter, okay? And not only with the PYQs, but we are also covering the theory part also, fine. So ये जो वीडियोस है बेटा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? अगर आप लास्ट टाइम में अगर आप रिवीजन के लिए चाहते हो, ठीक है, या खाली प्रैक्टिस के लिए चाहते हो बेटा, या अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, अगर आपको खाली शुरुआत से ही पढ़ना है, then also it is going to help you a lot, all right? So thank you everyone. Please download the SISYA class app. And please do like, share and subscribe our channel. Thank you everyone. Thank you. Bye bye.